So hello and welcome to my all dear student. पिले आज समस्ते फ्री रे अच्छो एंड डेफिनेटली रिमाइंड होउथिबो कि आज हमें ओलंपियाड हैला ओएवी हैला जेएनवी हैला ए सब परीक्षा पई प्रिपेयर करूछे। तो आज विषय वस्तु समस्तों पई इम्पोर्टेंट कहीं कि ना भाषा ज्ञान पिले यह एक सीमित ज्ञान यस और नो सॉरी यह एक सीमित ज्ञान नुह कहीं ना आमे प्रत्येक दिन नुआ नुआ शब्द शिखु प्रत्येक दिन नुआ नुआ प्रकार रो जो ग्रामर रहे ताहा मध्य शिखि थाउ। सो तमे जेते बेले गोटे प्रतियोगी बा गोटे परीक्षा लिखिबो कंपटीशन रे बसिबो तो सही समय रे जो मूल कथा मु कहि परिबी ग्रामर आधार रे हैला किंबा गोटे भाषा को ताहा ओडिया हो किंबा इंग्राजी हो पढ़िला परे गोटे बुझीबार कौन थाए गोटे लेवल थाए ना ताहा तम द्वारा बा तम भली तम चारि पाखरे जो कॉम्पिटिटर परीक्षार्थी पिले बसी थिबे कौन हुए ना बुझी पारुछ ना नहीं पुणी सेई भाषा रे ही जो पिला माने परीक्षा दियंती से माने जदिओ ताकू सहज भावंती बट ताहा एते मध्य सहज हुएनी और सही भाषा रे केते गुड़िए भूल भाल हेतु से माने गोटे मेधावी बा फाइनल लिस्ट रे आसंतिनी। ओके सो गणित हैला किंबा अन्य विषय वस्तु मानसिक दक्षता हैला तो ताहा जेमिति आम पे इम्पोर्टेंट एई भाषा मध्य गोटे कौन इम्पोर्टेंट विषय आ एथिरे ही प्राय कौन करंती पिले ना ओवर कॉन्फिडेंट हेई भूल भाल करंती कहीं कि ना सुनिबा को जेते सहज ताहा एते सहज हेई न थाए। आमे पूर्वरु मध्य आलोचना करिजे कि जो पैराग्राफ बा जो अनुच्छेद गुडी को आसे से अनुच्छेद गुडी को मध्य रे भी गोटे लेवल थाए। ओके सो ताको केते डिटेल्सली केते कहि परिबा ना ध्यान रो सहकारे पढ़िबा को पड़िबो आ ता उत्तर मध्य कम समय रे लिखिबा को पड़िबो। यस सो आज मु कहि परिबी जदिओ 8 और 9 नंबर ऑफ क्लास आमर ये भाषा परीक्षण रे तुम समस्ते अल्प बहुत आइडिया निहाती भाव में पाइथिबो। पुणी आमे से कथा गुडी आलोचना न करी आज जहाँ विषय पिले इंग्राजी रो आमे आरंभ करिबा। ओके ओके देखो सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्वेश्चन पढ़िबो देन डेफिनेटली सी पैराग्राफ मध्य रे जहाँ भी लिखा होइछि तार गोटे आइडिया मिलिबो आउ से आइडिया द्वारा ही आमे गोटे कॉन्फिडेंस मध्य पाइबा आउ कॉन्फिडेंस पिले जेमिति मु कहि परिबी ना ए टॉपिक टी मु ऑलरेडी पढ़ी की आसीछि। ओके जदिओ या नुआ तथापि मध्य तमे सेही भली गोटे कॉन्फिडेंस पाइबा पई प्रथमे क्वेश्चन पढ़िबा आ क्वेश्चन रे जहाँ आमे शिखिबा बा ए जो पैराग्राफ विषय रे जो आइडिया पाइबा ता ही हेल्प करिवो एक्यूरेटली समस्त क्वेश्चन रो आंसर देवा पई। ओके एहा हमर ओल्ड मेथड आमे एई मेथड रे ही एई भली प्रश्न आंसर सॉरी प्रश्न उत्तर देई थाउ। यस और नो चला द नेबर वाज वेटिंग टू सी देखो गोटे नेबर गोटे पड़ोसी वेटिंग टू सी से वेट करिसंती किछि देखिबा पई सेतिकी यदि तमे चाहिबो ऑप्शन मध्य पढ़ी की से आंसर जदिओ से नेबर जो वेट करिसंती एग्जैक्टली से गोटे मनीष देखिबा पई नाउ किछि देखिबा पई ठीक अछि ताहा जानि परिबो। सो नासरुद्दीन's वाइफ नासरुद्दीन's कोट नासरुद्दीन's हाउस एई केवल नासरुद्दीन बा व्यक्ति सह जड़ित यस और नो घर हैला स्त्री हैला बा पोशाक हैला बोधे ताहा देखिबा पई गोटे नेबर बाहरे अपेक्षा करिछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिले
द नेबर वाज वरीड नेबर विचलित थिले कहीं ना बोधहुए किसी गोटे से भली काम बा से भली घटना घटी थाई पारे जहाँकि गोटे विरक्तिया बा गोटे विचलित बा गोटे डरुआ मनोभाव थिला भली से नेबर से बाटर से वेट करिसेंती मे बी किसी देखिबा पई ओके पुणी क्वेश्चन नंबर 3 नासरुद्दीन हाड एन आर्ग्युमेंट अच्छा नासरुद्दीन गोटे आर्ग्युमेंट मध्य आर्ग्युमेंट रो अर्थ तुम सब जान कौन पिले ना कहीं कहा को भूल बुझंतीनी सब ठीक बुझंती पदे कथा कहबो पदे सुनिबो एई भली पिले आर्ग्युमेंट हुए आ से आर्ग्युमेंट सांग साथी मध्य रे भी हुए ओडिसा घरे मध्य हेई थाए घर घर मध्य रे भी हुए सो एक्जाक्टली नासरुद्दीन गोटे आर्ग्युमेंट कहा सह ताहा हमें देखिबा आ या पूर्वरु बोधे से आर्ग्युमेंट कारण हेतु नेबर बाहर अपेक्षा करिसेंती ना घटनाटी कौन हेई थाई पारे आ से घटनाटी पिले क्वेश्चन नंबर 2 रे दिया जाइछि जहाँ कि द नेबर वाज वरीड देन ए जो एबीसीडी जहाँ भी व्हाट एवर आंसर हम ताहा हमें पैसेज रु पाइबा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नासरुद्दीन्स वाइफ थ्रू अच्छा पिले नासरुद्दीन हाड एन आर्ग्युमेंट पर नासरुद्दीन्स वाइफ थ्रू नासरुद्दीन्स वाइफ थ्रू मीन समथिंग से फिंगिले ठीक अच्छे बोध हुए घर कली यस सो क्वेश्चन नंबर 5 चूज ए सुइटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज पिले जेते बेले तमे पिला मान बेसिकली कौन हुंती ना तरबर ही क्वेश्चन सॉल्व करंती फल ए जो सुइटेबल हेडिंग पाई मध्य से माने पैराग्राफ मध्य रे कौन करिवे ना हेडिंग 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 खोजो चेष्टा करंती यदि सेमिति हुए देन टाइम मध्य कौन हुए ना अधिक समय मध्य लगे आउ ठीक आंसर मिल न थाए विचलित ही जहाँ मध्य गोटे मु टिक कर दिए ताहा ही गोटे सिलेक्शन नेबारे जो गोटे 2 मार्क रो फरक थाए सेथिरे पिले 100 रु 200 पिला कटि जाआंती चिंता करो केते इंपोर्टेंट केवल पिला माने गणित और मानसिक दक्षता को अधिक प्रायोरिटी दियंती बट भाषा को एते प्रायोरिटी दियंतीनी आ सेही भाषा ही तुम मानक कौन कर ना गोटे सिलेक्शन गोटे सीट देवारे साहाଯ୍य करिवो सो ए 5 नंबर क्वेश्चन एक्सेप्शन जहाँ की पैसेज रे मिलिबनी बस आमे से पैसेज पढ़िला परे गोटे सुइटेबल ए प्रश्न बा ए प्रश्न गुडी को आधार रे आमे लिखि परिबा आउ वर्तमान चलो आमे से पैसेज मध्य पढ़िबा आउ ए जो 4 गोटी बा सॉरी 5 गोटी प्रश्न अछि से 5 गोटी प्रश्न रो मध्य आमे उत्तर लिखिबा ओके नासरुद्दीन जो आमे देखिले पिले ए जो प्रश्न रे जो कैरेक्टर मो कहि परिबी को माने अछंती नासरुद्दीन ओके तापरे वाइफ्स हुज वाइफ्स नासरुद्दीन वाइफ 3 नेबर ठीक अच्छे अच्छा ओके 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 नासरुद्दीन चलो ये लिखिबा आवश्यक नहीं बट जदियो चाहिबो बुझी पारिबो सो वर्तमान आमे क्वेश्चन रो उत्तर लिखिबा ये तो असंभव जेहेतु आमे एपंत मध्य ताको कौन पिले बुझी ना बस गोटे आइडिया 3 जनक मध्य रे नासरुद्दीन आउ ताको वाइफ भितर जेतेबेले आर्ग्युमेंट हुए नेबर रे थिबा बा पड़िसा घरे थिबा जो एक व्यक्ति यस और नो तांको किछि अलगा सुना जाए आउ से अलगा सुना जिबा फल से विचलित हुअंती बोधे किछि गोटे हेइछि आउ ताहा देखिबा पई से नासरुद्दीन को घर सामना रे अपेक्षा करिसेंती एहा होची स्टोरी मु मध्य फर्स्ट टाइम पढ़िली ए प्रश्न द्वारा मते जहा बुझा पड़िला
बोध हुए यह ही मो पैसेज रे मध्य शिखि पारिबी बा पढ़िला परे बुझी पारिबी। देन जदि वो पैसेज नुआ बट देख गोटे कॉन्फिडेंस मिलिला कि मो पूर्व ही पैसेज पढ़ी सारी छे आ परीक्षा को तुम जमी जाओ प्रिपेयर होइकी आ सेई पाठर जेतेबेले प्रश्न आसे बहुत बढ़िया लगे आ सेथिरे गोटे मन मध्य भल रुहे न जानिया विषय मध्य बनैछ नै लेख मार्क नै कि आस ताहा ही मैटर आ ताहा भी एई अनुच्छेद कण जदिओ नुआ तथापि मध्य पुराना लागे। हो चलो देख पिले पैसेज 10 लिविंग हिज हाउस वन मॉर्निंग लिविंग हिज हाउस जस्ट गोटे दिन कौन होइछि मो घरु बाहरु थिली ओके मोर अर्थ पिले एथिरे नासरुद्दीन कम एक्रॉस ए नेबर नासरुद्दीन कम एक्रॉस ए नेबर मीन्स जेतेबेले जाउथिले तांको पड़िसा घर लोक किए गोटे मे बी छोट छुआ मध्य होई पारे तांको से देखिले ओके हु ताहले से किए पिले इट अपियर्ड वाज वेटिंग टू सी हिम तार अर्थ से जो भली नजर बा तांकर जो कहि पारिबी हाव भाव जो भली थिला सते जेमिति से काहाको अपेक्षा करिसंती आ जेतेबेले मो घरु बाहरे डेफिनेटली मोर प्रश्न रहिबा कथा कि अपेक्षा काहाको करिसंती बट सेई भली प्रश्न मध्य नासरुद्दीन पचारि नाहांती द नेबर सेड बाध्य जेतेबेले नासरुद्दीन गोटे विचलित मनरे बाहरु थिले से काहा सह मध्य कथाबार्ता हेबा पई तांको इच्छा नथिला आ सेतेबेले से वेटिंग रे थिबा नेबर तांको आडो ही प्रश्न कले नासरुद्दीन यस और नो आई गॉट वरीड अबाउट यू दिस मॉर्निंग व्हेन आई हर्ड अ सॉर्ट ऑफ नॉइज इन योर हाउस मो भयभीत अच्छी बा गोटे जो घर कली बा आर्ग्युमेंट बोली कहा जाए मु तुम घर शुणिली आज सकाळे केवल सेतिकी नुह पिले फॉलोड बाय ए बोग बॉम्ब ओके मीन गोटे शब्द हेबा जेमिति पाखरे जहाँ भी थाई पिले आर्ग्युमेंट समय रे फपाड़ी दियंती फपाड़ीबा फल जो साउंड आसे ताहा ही बग बॉम्ब बोली कहा जाए आ से साउंड आसिला माने भाबो मैटर सीरियस दैट मीन डेफिनेटली नेबर्स मानकर अटेंशन रे आसी थाए आ से माने जो कहि परिबा आर्ग्युमेंट को कहीं की कोन पई एई भली प्रश्न पचारिबा को मध्य से माने कोन करंती इच्छा करंती यस और नो केवल पार्टी तुंड ताहा तो अलग कथा बट व्हेन इट फॉलोड अ बग बॉम्ब देन इट इज समथिंग different and everyone want to ask the question why it is so and you know if you are there then you will not able to answer as we are not on that mode okay how pile नासरुद्दीन heard him जेतेबेले नासरुद्दीन तरबर हेई से कहा सह कथा हेबा पई मध्य चाहु न थांती ना जाउ थांती सेही समय रे नेबर्स तांको आडू नासरुद्दीन को डाकी सॉरी नासरुद्दीन को कौन कहले ना इंगित कले आउ कहले कि आई गॉट वरीड मु विचलित अछि कि फ्रॉम दिस अबाउट दिस मॉर्निंग आई हर्ड ए शॉर्ट नॉइज शॉर्ट एंड नॉट ओनली दैट मच आई आल्सो हर्ड अ बग बॉम्ब फ्रॉम योर होम एहा पचारिले सो नासरुद्दीन हर्ड हिम बट नासरुद्दीन ताहा सुनी मध्य मेड नो कमेंट क्योंकि कहीं कि ना पिले से ना से आंसर देबा पे ही तांको इच्छा नथिला जदि वो आंसर देबार इच्छा थाए देन वेटिंग रु ही से नासरुद्दीन तांको आडू पचारि थांते कहा को अपेक्षा करिच आ काम कोन यस और नो द नेबर प्रेस्ड हिम बट व्हेन he did not get any answer from Nasruddin the neighbor pressed mean forcefully what happened what was the matter why like this
जबरदस्त पचारिबा yes or no then Nasruddin finally replied well ठीक अच्छे माय गुड नेबर मोर गोटे भल पड़ोसी yes or no ना जिते बड़े विपद आसे से समय से कारण जानिबा मो पाखक आसे से गोटे थटा बा परिहास परी वेल माय गुड नेबर बोले नासरुद्दीन कहले जेहेतु नासरुद्दीन स्टेट ऑफ माइंड वाज नॉट इन गुड to comment what happened with his wife inside his home yes or no okay a little hesitantly तो टिके जेमिति पिले आमे कहिला बेले टिके रही जाओ दैट मीन आमे किसी गोटे कहिबा जहा कि गोटे भलो भी हेई थाई पारे आ खराब भी हेई थाई पारे आ सेथि पई ताको हेजिटेंटली बोली कहा जाय मींस जस्ट रही जिबा जेमिति इंडिया और पाकिस्तान जदि जितिला बोली कहा जाय ताहा मध्य टिके रही कि कहिले भलो लागे आ टिके रही कि हारिला बोली कहिले मध्य सेही परिस्थिति को बुझेई थाए yes or no and that is hesitant okay but mostly hesitant कहिबार अर्थ ही नेगेटिवली बुझा पड़े बा जो लजिया बोली कहा जाए ठीक then finally Nasruddin replied well my good neighbor a little hesitantly he replied my wife and I were having an argument the same story yes or no my wife and I were having an argument and finally she got angry and flung my coat out of the window yes or no threw jaha flung taha pile बुझिला so पिला माने कोन करिवे when they are new that mean से माने प्रश्न मध्य पढ़ी नाहांती से माने डायरेक्टली पैसेज पढ़िबे आउ एई फ्लॉन्ग कहले कोन सेई अर्थ को बुझिबा बा एग्जैक्टली तार जो कोन अछि मीनिंग अछि ताको बुझिबा पई एटलीस्ट 2 to 3 मिनट टाइम स्पेंड करिवे बट द क्वेश्चन रे फ्लॉन्ग रो कोनोसी कोन किसी पचरा ही जाइनी ताको सिंपल रे कहा जाई छी थ्री बोध हुए लेट सी एग्जैक्टली सो केते इंपोर्टेंट देखो प्रथमे क्वेश्चन पड़ी आइडिया बा जो रिक्वायरमेंट थाए तार आंसर 100% एक्यूरेसी रे लिखिबा ओके बहुत किछि वेटिंग टू अच्छा एथिरे जो वेटिंग आसिला बिले फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर तो हमें पाई गलेनी ऑलरेडी द नेबर वाज वरीड बिकॉज रो आंसर देथिले नासरुद्दीन दैट hesitantly he replied my wife and I were having an argument that was the reason yes or no she got angry and flung my coat whose coat Nasruddin's coat out of the window the neighbor's curiosity was not satisfied then this much of answer I think it doesn't mean to happen this kind of situation so I want more I mean forcefully you pressed someone to get answer yes or no so ताहा पिले गोटे खराब व्यक्तिर काम आउ सेथि पय हेजिटेंटली बा परिहास स्वरूप नासरुद्दीन कोन कले वेल माय गुड नेबर मीन he is not really good okay ठीक अच्छे the neighbors curiosity was not satisfied but Nasruddin's how can the fall of a coat produce all that noise yes so whenever you flung or threw something suppose I can say a t-shirt then it will not produce that much of sound but might be a great bug bump okay so he again tried to know something he tried to know something and that's why he was not satisfied after getting the answer from the Nasruddin again
Nasruddin's answer or replied that पिले देखो ना गोटे साधारण कोट फोपाड़िले तो साउंड बा शब्द आसे केमिति ताहा तो हेई नथिबा कथा तथापि मध्य नासरुद्दीन किछि लुचैला भଳି तांकर जो वक्तव्य बा तांकर जो हावभाव कथावार्ता नेबर और नासरुद्दीन को मध्य रे तो नासरुद्दीन टिके हेजिटेंट भी होछंती पुणी जो नेबर्स तांको बार बार प्रश्न भी पचारुछंती कि एहा तो हेई न थाई पारे आउ काम सॉरी आउ किछि हेई पारे आउ एते साउंड तो न आसीबा कथा अधिक साउंड आसिला काहे कि so finally again Nasruddin answered well ठीक अछि you want to know everything details like this if you must know I was wearing the coat at that time okay पिले स्टोरी एई पंत जो कोट थ्रू फ्लॉन्ग ओके आउ तमे सब जानिछ बा तुमे जानिछ कोट मु ही पिंधिछि at that time I'm wearing that coat and why you questioned me again once I said that coat was flung away in the window yes where is it okay pile ha she got angry and flung my coat out of the window the neighbors then he out of the window and it was not produced that much of sound again asked by whom neighbors and finally Nasruddin replied that I owed that coat it might be I and my coat both are flung away yeah and that is the reasons it might be produce a bog bomb okay ठीक अछि पिले देख जदियो तुमे डिटेल्सली बुझी पारिलोनी ताहा भी मैटर करेनी एक्जाक्टली हमको सिर्फ एबीसीडी ऑप्शन रो बाछिबार अछि आउ लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज दिया जाइछि नो नीड टू वरी जस्ट गो टू सॉल्व द आंसर एंड तुम समझते जानिछो वी हैव टू सॉल्व दिस विद इन 5 मिनट्स अब बिफोर पिले 5 मिनट्स कहिबार अर्थ ए जो 20 मार्क रो सेक्शन थाए 20 मार्क रो सेक्शन को पिले मोस्टली एंड एवरेजली you try to solve 10 minute या 12 minute then you will able to cover every question with 100% accuracy बुझिला न हेले जदि छोटो मोटो भूल ही जाए देन एबीसीडी बाछिला बेले भी भूल हुए तो ए सब कारण हेतु पिले हजार हजार संख्या पिला मध्यरु केवल 80 किबा 100 जन को बछा जाए आ से 80 आ 100 जन पिले तांकर टैलेंट द्वारा नह से माने केते चालाक अछंती आ से माने परिस्थिति को केते शीघ्र बुझी पारंती सेति कि ही प्रश्न माध्यम रे पचरा जाए आ ताहा ही परवर्ती समय रे से माने 7 8 9 10 जो पढ़ंती सेही भली चालाक सेही भली स्मार्टनेस को ही अप्लाई करी बहुत किसी सीखि थांती आ आई एम ए गुड स्टूडेंट आ मु क्लास रे फास्ट होउची तो मो पई नवोदय हैला मो पई ओएवी हैला फिक्स अछि then that is your wrong thoughts okay आ तमे या मध्ये जानिचो जो माने टिके चालाक चतुर से माने ही टैलेंटेड थांती एवरग्रीन yes or no okay तमे समझते 3 इडियट मूवी देखिजो so you might relate okay चलो so first question the neighbor was waiting to see whom not Nasruddin's wife the first question to answer option A is correct the neighbor was worried अच्छा एथिरे ऑप्शन टिके लेंदी अछि बा तमे पेशेंटली पढिबो आंसर सेम लागि पारे बट ठीक आंसर बाछिया पई लास्ट पंत पढिबा आवश्यक अछि अच्छा व्हाई नेबर वरीड कहीं के अछंती कि ऑप्शन ए he had heard a noise in Nasruddin's house followed by a big bomb हाँ एई सेंटेंस भी पैसेज रे लिखा हिची बोध हुए
मु डायरेक्टली टिक करी आगु जीवी ताहा भूल हेई पारे तो आउ 3 ऑप्शंस अछि कहीं ना ए ऑप्शन गुडी को पिले लेंदी अछि सो किछि भी सेपरेटली ए जो थॉट्स अछि पैसेज रो ताहा मध्ये एथरे इंक्लूड हेई पारे and that might be the correct answer so you have to wait all right and read the rest of options to choose the correct one so option B he had not seen Nasruddin for several days this is wrong ये तो ठीक नुह कहीं की से waiting करिथिले the reason is that only a short noise and a big bomb that heard his neighbor from his home that much only but here is what is given in option B is that not seen Nasruddin it's wrong option C Nasruddin's had अच्छा quarreled with his wife पिले देख एथिरे जो झगड़ा लागिबा कथा कहा जायछि पूर्वरु जणा नथिला जो पंत नासरुद्दीन कहि नथिले आउ ताहा सेई नेबर्स को सेई समय जणा पड़िला जेते बेले नासरुद्दीन घर बाहर को आसिले आउ ए जो वरीड कथा कहा गला एहा काहे की थिला ताहार आंसर केवल नासरुद्दीन पाखरे ही अछि सो ऑप्शन ए इज मोर एप्रोप्रिएट वन ऑलराइट स्टिल we have the last option that is option D okay देखो ताको मध्ये हमें देखियो पड़िबो नहले भूल हेबार भी चांसेस कोन पिले ना हेई पारे जेमति कि ऑप्शन डी कथा तमे देखो नासरुद्दीन had lost his coat ये भी संपूर्ण भूल सो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट वन किंतु प्राय पिला माने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को कंफ्यूज हेबे असै ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को कंफ्यूज हेबा पछरे कारण कोन पिले मैटर सेम घटना समान किंतु नेइबर जो पंत नासरुद्दीन ठारो आंसर पाई नाहांती सेई पंत तार जो आंसर हेबा कथा ताहा ही हबो बट एथिरे नासरुद्दीन को पूर्वरु जो शॉर्ट नॉइज और बिग बम को से क्वारल बोली कहिले बा जो आर्गुमेंट बोली कहिले ताहा ठीक नुह okay question number 3 two options are in this slide and rest of two are on the next slide तो दुईटी ऑप्शन अछि ए स्लाइड रे आ दुईटी ऑप्शन पिले आरो स्लाइड रे अछि so question also in short you can remember so Nasruddin had an argument कहा सह देखो Nasruddin had an argument with his wife hope so this is only one of the correct among four okay चलो सो ऑप्शन ए तो आमे नेक्स्ट स्लाइड रे तार ऑप्शन जहा अछि ताहा देखिबा को पड़िलानी ओके चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 Nasruddin's wife threw Nasruddin's wife flung away out of the window बोली जो आमे पढ़ी के आसिले ताहा ही से कोन फिंगिले द कोट आउट ऑफ द विंडो her husband out of the window her neighbor out of the window her neighbor's wife out of the window okay सबुठू बिग चैलेंज एंड ए क्वेश्चन ही डिसाइड करिवो तमे सिलेक्शन पाइबो ना नाही Nasruddin's wife threw the coat out of the window पिले केवल कोट फोपाडिले बा कोट केमिति फोपाडिबे ऑलरेडी नासरुद्दीन से कोट से पिंधि छंती बोध हुए नासरुद्दीन को ही कोन करिवे ना झरोगा पटो हेला ठेली देइथिबे देन नासरुद्दीन सेई भली तळे पडिला परे जो साउंड मध्य हेला ताहा भी हेई थाई पारे so not only the coat can produce this much of bug bomb and how a person wearing that and I will thrown out easily then mostly I have to post him and that is the reason option number B is correct अधिक साउंड मध्य आसिला ताहा सिंगल कोट द्वारा तो हेई न पारे पुणी कोट मध्य नासरुद्दीन पिंधि थिले ओके ओके
चलो पिले क्वेश्चन नंबर 5 चूज ए सुटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज Nasruddin's coat, Nasruddin and his wife, Nasruddin and his neighbor, the big bump. What would be the most appropriate heading of this given passage? Which one you want to choose? ये भी पिले काठिकर पाठ yes or no ओके यहाँ को मध्य पिला माने सी पैराग्राफ रे खोजिबे एक्जेक्टली हेडिंग 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 काहे ना हम पिला एमती ही सॉल्व करू yes or no पिले आमे मध्य बा मु मध्य सही भली ए पैराग्राफ गुडी को आंसर लेखुथिले so I have my own experience Nasruddin's coat या the big bomb Nasruddin and his wife Nasruddin and his neighbor देखो पिले ए स्टोरी रे बी आउ सी हवनी हेडिंग ओके कहीं कि ना नेबर्स रो जेतिकी इंपोर्टेंट बा नेबर्स रो जो कैरेक्टर जेतिकी थिला तांकर वाइफ रो कैरेक्टर मध्ये सेतिकी थिला सो एमाने सेपरेट एते डिटेल्सली डिस्कस करि परिबेनी Nasruddin's and his wife if you choose then it is all about a well conversation it was not indicate an bad argument and finally our neighbor heard all that all right so mu kahi paribi na Nasruddin and his neighbor also correct hei no pare most probably if they दुईटी ऑप्शन दे छंती बी आउ सी पिले प्रोबेबली Nasruddin आउ नेबर पाखरे ही हेई पारे कोन टॉपिक कहीं कि ना what kind of argument that had inside his home was not described and his wife view in the passage is given very less but the neighbors one views given more and if you compare both of them you should choose neighbors not his wife while you choosing the heading of the given passage okay किंतु ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ठीक ऑप्शन डी पिले द बिग बॉम्ब काइना ए बिग बॉम्ब द्वारा ही नेबर्स मध्य आसिला आ नेबर्स जेतेले प्रश्न कला Nasruddin वाइफ को दोष देले आ एई परी ए जो स्टोरी डिस्क्राइब हेची शॉर्ट नॉइज मतलब अल्प कथाबार्ता रे डायरेक्टली किसी गोटे बड़ जेमिति अधिक रागी गले जो भली सिचुएशन होय सही भली देन शॉर्ट नॉइज इज आल्सो नॉट एनफ टू क्वेश्चन एवरीथिंग यस एटा तो होउची प्रत्येक घरे मध्य किंतु जेते गोटे साउंड आसे सते जेमिति बहुत किछि बड़ बा जो बैड आर्गुमेंट बा बिग आर्गुमेंट तो सही आधार रे बिग बॉम्ब विल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज एज इट कोन करे ना से नेबर को मध्य Nasruddin को वाइफ को मध्य और Nasruddin इटसेल्फ तांको मध्य डिस्क्राइब करे ओके चला सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन जदि ऑप्शन नंबर डी नुह पिले ऑप्शन सी हबो राइट ओके Nasruddin's कोट ये एप्रोप्रिएटली ही हबनी ठीक अछि देखो सो आ गोटे पैसेज अच्छे आमे ताकू स्पीडली ठीक अच्छे आमे
फटाफट ताको सॉल्व करिबा जदि टाइम हुए देन ए लैंग्वेज रे ग्रामर रो भी मु किसी पर्सन नै के आसी छी लास्ट क्लास रे बोध हुए हमें नाउन विषय रे आलोचना करिथिले देन नाउन परे पिले एडजेक्टिव कथा हमें डिस्कस करिबा ठीक ना आ गोटे पैसेज को हमें कंप्लीटली सारिला परे ओके नाउन कथा मध्य आलोचना करिबा ओके ठीक अछि देखो ओ सॉरी वेट ओके चला this is passage number 11 not 7 okay चलो same process first read question get idea then try to understand passage that much sufficient to answer and you will get 100% 5 out of 5 the largest living thing on the earth are okay living thing बहुत दिन पर्यंत जो बंचिकी रुहंती द कैलिफोर्निया पाइन्स आर अच्छा कैलिफोर्निया पाइन्स ये गोटे ट्री बोध हुए द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स मोस्ट बी कैलिफोर्निया पाइन्स पाइन ट्री वी विल रीड इट क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन वी टेल द एज ऑफ ए ट्री अच्छा गोटे गछर आमे केते वर्ष हैला ताहा आमे केमिति कहिबा बा केमिति कहि परिबा ऑप्सो ए पैसेज रे ही तार आंसर अछि इवन दो चारिटी ऑप्शन मध्ये अछि से चारिटी ऑप्शन द्वारा भी आमे इजिली ताको बुझी मध्य पारिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 a record of rainfall can be read in tree rings a record of rainfall पिले केवल गछर वर्ष केते ताहा आमे कहिबा केउ कारण पई आउ केउ व्हिच वन इज करेक्ट एमानको मध्यरु जो ठीक आंसर हबो केवल सेति कि नहो आमे रेनफॉल मध्य आमे कहि परिबा बा रेन जो रेकॉर्ड हुए रेकॉर्ड मींस तमे जानो ना 100 मिलीमीटर वृष्टिपात यस और नो ना ठीक से भली ट्री मध्य सहाय्य करे जो रेनफॉल रो लेवल बुझिबा पई कहिबार अर्थ 20 वर्ष तळे जो परिमाण रे वर्षा होउथिला वर्तमान रो वर्षार परिमाण पिले तमे कंपेयर करिवो एंड दैट इज वी कैन से एज रेकॉर्ड ऑफ रेनफॉल आउ ताहा गोटे ट्री मध्य केमिति बुझाए ताहा भी एई पैसेज रो आमे सिखिबा एंड ultimate goal is to choose the correct one yes out of the 4 options acha question number 5 if a tree has 50 rings in its trunk its age is पिले देखो एथिरे आमे केवल ट्री विषय रे ही प्रत्येक क्वेश्चन रे किछि ना किछि क्वेश्चन आमे पाइले जेमिति प्रथम क्वेश्चन रे लार्जेस्ट आसिला देन सेकंड क्वेश्चन रे आसिला ट्री ओके जदियो कैलिफोर्निया गोटे शहर बट स्टिल पचरा जाइछि ट्री विषय रे ही आउ थर्ड क्वेश्चन कोन कहिबा ना सही ट्री रो एज हमें केमिति जानिबा फोर क्वेश्चन कोन ट्री रेनफॉल रेकॉर्ड कथा किछि कहि पारे किछि डाटा देई पारे बोधवे ता पाखरे किछि रेकॉर्ड थाए रेनफॉल विषय रे देन 5 नंबर क्वेश्चन पिले से ट्री रो एज exactly केते if that having 50 rings in its trunk all right देखो ट्री एज रेनफॉल एहा पैसेज भीतर डिटेल्स अछि होप सो
समस्ते बुझिल चलो आमे पैसेज पढ़िबा देन वन बाय वन क्वेश्चन मध्य देखिबा trees are the largest living things on the earth पिले गछ अधिक दिन बंचंती and they live longer than any animal जो एनिमल ठारो मध्य से माने अधिक दिन ही कोन डायनासोर मध्य हो अधिक दिन बंचंती the tallest trees then tallest सबुठु उच्चा बा डेंगा गछ बोली आमे कहि परिबा are mountain ashes which have grown to well over 330 feet भाबो ओके से गछ पिले माउंटेन एसेस आउ ताहा केते फीट पंत तार जो उच्चता हेई थाए 330 330 द ओल्डेस्ट ट्रीज आर द कैलिफोर्नियन पाइन्स अच्छा आउ सबुठु पुराना कोन कैलिफोर्नियन पाइन्स एंड कैलिफोर्निया इज लोकेटेड इन वेयर को देश रे अछि बोले लेख which country question is from my side then the age of a tree can be told by acha age something question thila the age of a tree can be told by counting the rings then the result will be and the answer must be counting what rings that contained by that tree yes the age of a tree can be told by counting the ring in the trunk in most kind of temperate trees पहले टेम्परेट कुहा गला टेम्परेट कहिबार अर्थ ना अधिक गरम ना कहि परिबा देखो शीतुआ अंचल ओडिसा रो काश्मीर किए केउ जगह को कहा जाय पिले देखो जो टेम्परेट मध्यम बा बेसी टेम्परेचर भी नुह बहुत कम टेम्परेचर भी नुह आ बहुत अधिक टेम्परेचर भी नुह मझा मझिया आ ताको टेम्परेट एरिया बोली कहा जाए ठीक इंडिया इज लोकेटेड इन ए टेम्परेट जोन बा इंडिया रो जो लैंड बा भूमि आमे कहि परिबा पिले ता गोटे टेम्परेट बा मध्यम धरणर ग्रीष्म प्रवाह कौन कहा जाए भूमि रूप बोली कहा जाए ओके सही भली in most kinds of temperate trees that is grown in बस तार आंसर भी तले अछि grown in neither very hot nor very cold okay so new wood is formed each year in a layer outside the wood of the previous year okay टेम्परेट कथा बुझिबा पई तमे देखो ये आवश्यक नुह पिले आमे कम टाइम रे केमिति ठीक आंसर दे परिबा ताहा इंपोर्टेंट जते बेले आमे ओएवी जेएनवी एंट्री करिबा व्हाट एक्जेक्टली द टेम्परेट रीजन डिटेल्स आमे पढिबा यस so new wood is formed new wood that mean ये planted नुह जो गछ अछि से गछ मु कहि परिबी ट्रंक रे पिले कोन ना आउ गोटे लेयर गोटे नुआ जो ट्रंक आमे बा तारो जो छालो बोली कहा जाए ताहा न्यूली फॉर्म हुए ओके ताहा भी ईच ईयर बा प्रत्येक वर्ष इन ए लेयर आउटसाइड द वुड ऑफ द प्रीवियस ईयर सपोज ये 2024 पिले जेतबे 2025 हबो एई पाखरे गोटे लेयर ताकू कोन करिवो कवर करिवो होप सो 26 27 तो layer और this layer are only responsible to form the ring and hence they are able to what determine the age of a tree and we are easily what we can counting the rings to tell what exactly the age of this
टेम्परेट regions tree. Okay. देखो पिले आउ थरे new wood is formed each year in a layer outside the wood of the previous year. देखो ए पेसेज टिके टेक्निकल बा पेसेज बुझिबा पई ज्ञानर आवश्यक मध्य कहीं कि ना जहाँ भी लेखा है पिले स्ट्रेट फॉरवर्डली आमे ताको पढ़िले मे बी अल्प बुझा पड़िबो ठीक अछि आमे देखो एथिरे ही कंफ्यूज हे जिबा इफ दिस इज न्यू टू अस कोथिरे कहिलो न्यू वुड इज फॉर्म्ड each year new wood is formed each year mean how is it possible एई भली तमे पचारिबो बट इन ए लेयर आउटसाइड द वुड से लेयर बा से वुड रो लेयर बाहरे बा ताको कवर अप कला भली आ गोटे लेयर हुए ताहा प्रत्येक वर्ष हेई थाए आ ताहा ही रिंग तैयारी करे आ से रिंग ही हेल्प करे गोटे गछर एज कहिबा पई आ ए रिंग को हमें काउंट कला परे कहि परिबा जे जो क्वेश्चन नंबर 5 तमे देखिलो कि 50 टी रिंग अछि डेफिनेटली 50 ईयर हमें से गछ रो एज बोली आंसर लिखि परिबा ऑलराइट एथिरे साइंटिफिक टेक्निकलिटी साइंटिफिकली टेके बुझिबार आवश्यक बट देखो ये लेवल ऑफ तम मानन को गोटे सहज पैसेज आसीबो आ गोटे डिफिकल्ट पैसेज मध्ये आसीबो सेथि पई ही लैंग्वेज बा भाषा परीक्षण तम मानन को डिसाइड करे whether you are fit for OAV or JNV and sorry or you are only staying in this medium where you are now sorry where you are right now all right acha the layer of wood as seen on the cot end of a fell tree cot end पिले जो ट्रंक तमे देखिबो देखो we can understand like this पिले एहा गोटे गछ ताको आमे जदि कट करबा तार जो ट्रंक रे जो सर्कुलर जो आमे देखिबा गोटे सर्कुलर टाइप रो से सर्कुलर रो जेते तमे इनर जीवो जेते भीतर आडो को जीवो सेतिगिटी रिंग क्रॉस करिवो ओके ठीक सेही भली इफ यू सीन a cut end of a felled tree and they all are looks like a circular ring and that rings are called the or that circles are called the annual ring annual ର अर्थ प्रत्येक वर्ष बा गोटे वर्ष पर गोटे वर्ष each year आउ से रिंग पिले देखिबा पई सर्कल एहा भी क्वेश्चन ही पारे बट क्वेश्चन पचरा जायनी what type of shape of a ring the trees contain जदि आसिला पिला माने खुजिबे is it rectangle square okay आ कोन अछि पिले hexagon then circle ठीक then circle will be the right one as it has given in the passage ठीक अछि सो डिटेल्स कोन तमे बॉटनी सब सुनिछ स्टडी ऑफ प्लांट was written by Theophrastus yes or no so से ही कहि परिबे कि केउ भली ट्री मानको पाखरे केउ भली रिंग देखा जाए आ जहा को तमे कार्बन डेटिंग माध्यम रे भी एक्जेक्टली एज कहि परिबो विदाउट काउंटिंग दैट रिंग हाउ each ring in the trunk of the wood represents 1 year of the tree's life प्रत्येक रिंग गोटे गोटे वर्ष कौन करती ना से गछर जो एज कथा कही था दैट मीन इफ दे having 50 then that ages of the particular tree is 50 so in a year of good rainfall अच्छा rain record बा rainfall record मध्य गोटे क्वेश्चन अछि ना नहीं hope so you will get that answer in this statement
In a year of good rainfall, the ring formed is wider than one formed in a drier year. पिले माने जो जेतेबेले वर्षा अधिक हुए जो रिंग फॉर्म हुए ताहा बृहत हुए बा बड़ हुए आउ जेतेबेले वर्षार परिमाण बहुत कम हुए जो रिंग फॉर्म हुए ताहा बहुत छोट हुए देन आमे से रिंग रो उपस्थिति जेमिति लुक देखो ए तीनोटी रिंग रो पिले फर्स्ट रिंग बहुत कम ओसारिया अछि सो एई वर्ष अधिक बा कम परिमाण रे वर्षा हेइथिबो बट नेक्स्ट रिंग देखो केते मु कहि परिबी केते बड़ एवं ता पाखरे जो क्षेत्रफल अछि से दुईटी रिंग मध्यरु अधिका सो एई वर्ष अधिक वर्षा हेइथिबो बोली अनुमान करि परिबा एंड हेंस ring also ultimately give the data of rainfall in a particular region. Yes, okay, ठीक. Again देखो each ring in the trunk of the wood represents 1 year of the tree's life. In a year of good rainfall, the ring formed is wider than one formed in a drier way. Okay, a record of rainfall can thus be read in tree rings. Both age and record of rainfall can be imagined as well as understand with the help of ring. बुझिला? Okay. Hope so you will all get that answer as well at a timely. Still आमे फटाफट ताकू आंसर टिक करिवा जेहेतु पैसेज टिके टेक्निकलिटी डिफिकल्ट तुम कहि परिबेनी स्टिल तुमको टिके लेवल ऑफ नॉलेज दरकार बुझिबा पई आउ एहा ही मोस्ट प्राय पिला एई पैसेज को अटेंड ही करिबेनी ओके देखो द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ हु ट्री ओके ऑप्शन डी द कैलिफोर्नियन फाइन्स आर the oldest trees, the tallest trees, the largest living things, the most useful trees. No, option A is correct. Okay, how can we tell the age of a tree? By measuring its height? Never. By counting its branch? This also incorrect. All right, then the rest of two options are in the next slide, which is here. First option, which is C, by testing its wood. How you test it? Is it something which you want to eat? No. And is there anything else that you want to what test this much a person to tell the ages of that tree? Okay, so ame kahi pariba testing method be incorrect. The option D, that is the correct one, which is given directly in that passage, counting the ring in its trunk. बुझिला? ओके पिले एथरे गोटे कंफ्यूज कोन हेई पारे सॉरी गोटे कंफ्यूजन हेई पारे they might give option C as counting what counting the ring yes of a branch. So counting ring देखिला मात्रे पिला माने टिक करंती बा चूज करंती then that is wrong. तमे लास्ट पर्यंत पढिबा को पडिबो सेही सेंटेंस को patiently, then you will able to choose a correct one with your 100% accuracy. Even देखो the same thing in option D, which is counting the ring of a कोन but counting the ring in its trunk. Option C is all about branch, but option D is all about trunk. So correct one is trunk, as it bear the most of ring, which is primary to understand about the plant and its branch. How? I'm not difficult करवानी, but this much is correct one. So counting ring. देखो यदि किस्मत ठीक न थिवो देन ए ब्रांच मध्ये से माने लिखि देबे तो तमे मध्ये ब्रांच को ही ठीक करिकि आसीबो आ ऑप्शन डी को मध्ये आ बाछिबो नाही. ओके,
डू यू गेट माय पॉइंट? हाउ पिले 4 और 5 देखो ओके a record of rainfall can be read in tree rings अच्छा every year a ring is formed in the trunk of a tree yeah of the tree this is not the correct one as now we are going to what read about the level of rainfall in each year and that has yeah that data was contained by the ring of a tree in that particular region कहीं से ring ही कहिबो exactly the level of rainfall ना अधिक ना कम जदि अधिक हुए then the ring will be become very big and if that less amount of rainfall in that region in that year then it would be very less mean very small ring okay option B trees are the largest living things trees are the largest living things yes this is correct but the question is not all about it the question is about the record of rainfall okay option C in a year of good rainfall the ring formed is wider acha ठीक lagi paruchi and this might be the answer but still this is not final I have to wait patiently up to the last statement which is option D yes or no okay देखो पिले in a year of good rainfall जो वर्ष भल वर्षा हुए सेई वर्ष जो रिंग कौन हुए तैयारी हुए ताहा वाइड थाए बड़ रुहे किंतु जो वर्ष कम वर्षा हुए सेई वर्ष से रिंग पिले छोट हुए आउ ताहा ऑप्शन सी रे अछि एंड होप सो करेक्ट हेई पारे बट ऑप्शन डी एबे पंतो मु ओवरलुक बा पढ़िनी सो आई हैव टू जज these questions very carefully so need to read option D अच्छा ऑप्शन डी रे कोन अछि trees give us good rainfall yes this is also correct but the question is not all about whom you give good rainfall even after option B trees are the largest living things yes every option B and D are correct according to their sense but the question is something different about record of rainfall आउ सेही कारण हेतु आमे कहि परिबा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन टिके बुझेबा पे चेष्टा करिवो आमे स्पीडली जाउछे काहे कि ना टाइम भी हे गलानी पिले वी हैव टू फिनिश इट एंड इन द नेक्स्ट क्लास आमे ग्रामर पढिबा समस्त माने रखिबो ओके देखो क्वेश्चन नंबर 5 if a tree has 50 rings in its trunk its age is hope so everyone can do this answer I will not again explain it so thank you everyone for all these ओके देखो एडजेक्टिव अच्छे बट नेक्स्ट क्लास आम आलोचना करवा आज ये पुणी देखा नेक्स्ट संडे विथ अ गुड थॉट्स एंड गुड नॉलेज थैंक यू